Sure. Thank you. I will make you host. Over to you, ma'am. Thank you so much, Ritika. Good evening, everyone. I hope yesterday's session was not all that heavy for you. You all enjoyed that session and learned a lot. And by today, मैंने बोला था remedies ढूंढ के आना सब. So how many of you have worked on that? Remedies किस किसने ढूंढ ली? Whatever personalities we discussed yesterday, कैसा I hope सबको समझ में आया था and everybody could relate कितनी तरह की intelligences हमारे अंदर exist करती है. And yes, हमारे आसपास ये सारी पर्सनालिटीज रहती हैं. Good evening, everybody. I would just request you all to switch on your cameras once. I want to see you all in an active state of mind, ready to receive everything. Good evening, Govindji. So कल के सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. हाँ, you will have to fill up your Google forms. You will be getting it. Definitely you'll get it. और just type the word ready in the chat box. Cameras on कर लीजिए. I want to see you all on cameras. जब हम अलर्ट होते हैं, एक्टिवली हम लोग बैठे तो हम ज्यादा समझ पाते हैं. आई थिंक हम ज्यादा रिटेन भी कर पाते हैं उसके बाद. सो जस्ट टाइप द वर्ड रेडी. थैंक यू इंजा, पद्मावती, अरिजीत, पारुल. एक्साइटेड टू लर्न. यस, वंडरफुल. बाकी लोग टाइप करो. टाइप द वर्ड रेडी या आर. गुड इवनिंग सुषमा. What all did you learn yesterday? What were your takeaways from yesterday's session? We'll brush up definitely. Yes. Any nice takeaways you had yesterday? कल कुछ अलग सीखा? Okay. Inza, what did you learn? Okay. Cameras on कर लीजिए. That would be nice on your part. Yes. Chalo, let's dive into the session now without wasting any time. So I'll just share my screen. Is my screen visible to you all? Can you all see it? Yes, career selection with multiple intelligence. Yes, and after learning, I'm saying, I was saying my family have this kind of intelligence. Yes, okay. Okay. Chalo, let's dive into this session. I'll quickly brush up with yesterday's session because this is a continuation. 4 intelligences we discussed yesterday and rest of the 4 we'll be discussing today. Right. So what all did we talk about? We talked about, please everybody put off the mobile notifications, turn on your cameras, and question and answers like yesterday we'll be taking in the end of the session. All right. So yesterday, like we shared, you are the maker of yourself. You can carve yourself. So you are yourself responsible for the kind of life, the quality of life you're leading today. And yes, we discussed that all kinds of intelligences are important. And how can we help our children? By involving ourselves with our child, knowing about our children, and also nurturing them accordingly. And there are 8 kinds of intelligences that we are going to discuss today. And we discussed 4 of them yesterday. So any ability that can give you name, fame, and money and success will be called as intelligence. And intelligence is your grasping power and your ability to be able to apply that in your life. That is intelligence. And then we discussed about what these people were good at. Linguistic intelligence we discussed.
and what all a child who has linguistic intelligence can become later in their lives. And yes, then we talked about logical intelligence, and all these great people, they had logical intelligence. Logical intelligence वालों की capacities क्या है, और you know what they can become, career क्या क्या इनके साथ connected है. इसके बाद हमने डिस्कस किया था, what is this? Visual intelligence. Okay. So विजुअल इंटेलिजेंस वाले लोगों की क्वालिटीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, और फिर ये लोग क्या बन सकते हैं. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट मी टू स्पीक इन टुडे. आज का लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या होगा सबका? इंग्लिश, हिंदी, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. सो आई थिंक आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस. ऑल राइट, ऑल राइट. ओके. देन वी टॉक्ड अबाउट बोथ. ऑल राइट, ऑल राइट, दोनों लैंग्वेजेस में बात करेंगे. And then we talked about the physical intelligence or kinesthetic intelligence, and how, this helps our children to become all these, right? Mixed language. All right. So today we are going to start with the next one. So you have to guess what these people are good at now. Lata Mangeshkar, A.R. Rahman, Adnan Sami, and Shivamani. What are they good at? Okay, musical, music smart. Yes. आप सब लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं. वाओ. म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सिंगर्स. यस. म्यूजिक. वंडरफुल. सिंगर्स. यस. वंडरफुल. यस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस. यू गेस्ड इट राइट. ये सब लोगों के पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है. म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आप देखेंगे, व्हाट यू सी, दे आर एबल टू डिस्टिंग्विश साउंड्स अराउंड देम, बी इट मेलोडीज. अपनी मेलोडीज बना सकते हैं, चिड़ियों की आवाज, म्यूजिक की आवाज, वट एवर, वो अलग अलग साउंड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. उनकी रिदम, पिच, टोन, साउंड का स्ट्रक्चर क्या है, इनकी अंडरस्टैंडिंग साउंड को लेके बहुत हाई होते हैं. तो गाने में तो डेफिनेटली ये इंटरेस्टेड होते हैं. व्हेन दे नॉर्मली आल्सो व्हेन दे टॉक, दे these children speak in a sing song language. मम्मा, मुझे ना भूख लग रही है, तो सिंग सॉन्ग लैंग्वेज में, मम्मा आई वांट टू हैव डिनर. You will see them speaking in a sing song language. So they have we will talk about the characteristic features. आपने देखे होंगे. Can somebody share क्या क्या फीचर्स होते हैं? I think by now you are pro at understanding. The moment I described कैसे होंगे वो बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इनके फीचर्स होंगे. पोजेसिव होते हैं ये बच्चे. शाय, नहीं शाय नहीं होते. ये वाले बच्चे जो म्यूजिकल होते हैं, दे एक्सप्रेस देयर इमोशंस थ्रू म्यूजिक. अटेंशन सीकर्स. यस, अब पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट कीजिए. प्रेज सीकर्स. दे आर एबल टू मेक मेनी साउंड. दे आर कॉन्फिडेंट. दे आर एक्सप्रेसिव. दे हैव अ सॉफ्ट वॉइस. जरूरी नहीं कि आवाज अच्छी हो, म्यूजिकली इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकते हैं, मतलब, बट इनकी अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक को लेके बहुत हाई होती है. यस. सॉफ्ट वॉइस. ओके. वंडरफुल. So you all are getting pro at understanding. So these children, they listen and respond with interest to a variety of sounds, including your human voice, environment की sound, जो कि birds की हो जाए, ये cars की अलग अलग आवाजें, horns की, मतलब अलग से ये लोग पहचान सकते हैं. Music, और yes, they can also organize these sounds into some meaningful patterns. जब गाते हैं तो मतलब ये क्रिएट कर सकते हैं कुछ ब्यूटीफुल मीनिंगफुल पैटर्न्स में, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. रिदम की अंडरस्टैंडिंग, पिच की अंडरस्टैंडिंग, टोन, टोनालिटी, सब कुछ, दे आर इंटरेस्टेड इन आर्ट. खाली आर्ट नहीं, मतलब सिंगिंग से रिलेटेड दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड.
और म्यूजिक सीखने में म्यूजिशियन से या कैसे भी दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक अराउंड देम. सो दैट इज वन थिंग. और एक इनका फीचर आई वुड शेयर, दे आर अ प्रिटी जेलस काइंड ऑफ चिल्ड्रन. बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं. लाइक इफ द चाइल्ड इज अ बॉय, he would be jealous if I mean they're very possessive about themselves. They want to be loved completely. थोड़े से जेलस ज्यादा होते हैं ये लोग. और इससे इससे करियर्स गेस कीजिए आप, व्हाट ऑल करियर्स दे कैन गो इनटू. इन आवर टाइम्स वी यूज्ड टू थिंक ओनली सिंगर बनोगे क्या, हर टाइम गाते रहते हो. एंड वी यूज्ड टू स्नब दोस चिल्ड्रन. हर टाइम गाना थोड़ी चलेगा. हाउ विल यू स्टडी, एकेडमिक्स में चाहिए बाबा तुम्हारी परफॉर्मेंस. सो दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू. बट nowadays, if you talk of today, there are so many careers involved with musical intelligence. क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है? What all can a child with musical intelligence become? Yes, musician, band masters, singers, wonderful, or composers, music directors, musicians, singers, music directors. उसके अलावा भी बहुत कुछ है. Playback singers, voice over artists, wonderful. Yes, lyricists, yes, wonderful. Music directors. Come on guys, actively chat box को एक्टिव करो. मिमिक्री हमने कल डिस्कस करा था, विजुअल वाला. दे रिकॉग्नाइज डिफरेंट वाइब्स एंड नेचर. सिंगर्स, मिमिक्रिस्ट नहीं, मिमिक्रिस्ट विजुअल वाला होता है. यस, ओके. और so there's one beautiful thing that teachers can do, some difficult thing that you're teaching, if you convert it into a music. I remember there used to be a very long poem in my class. I don't remember, 5th या 6th की बात है कि एक डांस टीचर, वो काइनेस्थेटिक वाला था, फिजिकल वाला, जो बॉडी की मूवमेंट में इंटरेस्ट. म्यूजिक टीचर बन सकते हैं. यस, राइट. सो देयर वाज अ वेरी लॉन्ग पोएम, द मिलर ऑफ द डी, इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट. यस. तो उसको एक हमारे टाइम में टीचर, म्यूजिक की टीचर ही इंग्लिश की टीचर थी, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया सॉन्ग में. तो आई रिमेम्बर द There dwelt a mill, a hill and wood beside the river Dee. आज तक मुझे वो पोएम याद है क्योंकि वो म्यूजिक से सुनाई थी. उसमें वो जब रिदम चेंज होता है तो याद हो जाता है, उसके लिरिक्स आपको याद हो जाते हैं. तो वेरी इजीली, लंबे से लंबा कंटेंट आप बहुत इजीली लर्न करवा सकते हैं बच्चों को म्यूजिक के साथ. So that is one beautiful thing. If you have identified somebody with this intelligence, you can use it to the maximum. So song writers हो सकते हैं, performing musicians हो सकते हैं, piano turner, singer, musical theater actor, studio engineer, इंस्ट्रूमेंट मैनेजर, रैपर. आज बहुत ज्यादा चल रहा है, रिदमिक होने से जल्दी याद रह जाता है. यस. एंड डिस्क जॉकी, फिल्म इंस्ट्रूमेंट मेकर, कंपोजर, म्यूजिक टीचर, साउंड इंजीनियर, म्यूजिक थेरेपिस्ट. साउंड के ही कितने तरह के इंजीनियर, स्टूडियो वाले अलग है, साउंड इंजीनियर्स अलग है. बहुत सारे इंजीनियरिंग इसमें अब तो आईआईटी में भी इंट्रोड्यूस हो गया है. आई मीन इतने सारे कोर्सेज हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस वालों के लिए. सो इट्स नॉट जस्ट सिंगर. हमारे टाइम में बोला जाता था, लता मंगेशकर तुमने ही बनना है क्या? सो टीचर्स आल्सो स्नैप यू डोंट हैव टू कीप सिंगिंग एवरी टाइम. बाकी चीजों पे भी ध्यान दो. देयर आर सो मेनी बेटर थिंग्स टू बी डन. एकेडमिक्स पे ध्यान दो. And somebody with musical intelligence was not so much promoted by teachers and parents. What is conductor? वो जो मशीन पे बैठ के उसको कन्वर्ट करते हैं, म्यूजिक को सारा कंट्रोल करते हैं. और दूसरे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि कौन सा म्यूजिक अब चलेगा, वायलिनिस्ट प्ले करेंगे, और अब ये वाला इंस्ट्रूमेंट चलेगा, अब सिंगर गाएगा. दैट इज व्हाट. यस. सो वेल, there are so many kinds of careers associated with musical intelligence. Now I had asked about the remedies. If somebody is not musical, will a teacher or a parent be interested? नहीं है तो कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है. Had it been science, maths, तो आप कोशिश करते और वो इंटेलिजेंस डेवलप करते. बट देन कैन वी डेवलप दिस इंटेलिजेंस और उससे कुछ फायदा होने वाला है? इसकी कुछ रेमेडीज है?
Can we do something about it? म्यूजिक सुनाना है बस, मे बी क्लासेस में डालना है, मे बी जब हम ट्रैवल करते तो हम सब गाएं कोई गाना, एंड द चाइल्ड वुड बी मोटिवेटेड इनफ टू सिंग. इट्स इंटरेस्टिंग ना, सिंगिंग इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग. And yes, we can make it a practice also, like when they are not able to learn something, so we can help them learn through music. कुछ म्यूजिक डाल दिया और सिंग सॉन्ग तरीके से उनको लर्न करवाया, जल्दी लर्न होगा. सो यस, इट्स गोइंग टू हेल्प देम इन द लाइफ. हमेशा स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हम लोग म्यूजिक यूज करते हैं, और आज की डेट में हाँ, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस. और म्यूजिक थेरेपिस्ट भी आ चुके हैं आज. एक ये भी एक करियर है, थ्रू म्यूजिक, म्यूजिक थेरेपी. यस, इसके साथ यू कैन हेल्प समबडी रिलैक्स देयर माइंड. देयर आर रिलैक्सेशन म्यूजिक्स अवेलेबल नाउ, और बहुत तरह के म्यूजिक्स आ चुके हैं इसके ऊपर. दिस इज यूज्ड इन थेरेपीज. Encourage the child to listen to different music and ask a lot of queries so that he can develop more interest. Yes. So we used to play one game, Antakshri, when we were small. So how many of you play Antakshri? Okay, Madhuchanda does that. And who else? Padmavati. Wonderful. Nirupama. Okay. Inza. Kiran Upadhyay. Govind Joshi. Gauri. Wonderful. With students. You can do it for yourself also. So what? Yes. Wonderful. All of you do that. Antakshari हम सबने खेली है. And it's very interesting ना. मजा आता है ना खेलने में. And we used to play one game that was like, even now you play. Okay, wonderful. The best time pass, yes. So when all of us cousins, when we get together, we sing. We play Antakshari. Yes. It's still a very favorite game today. When we get together, we can, in school also. Yes, wonderful. So we used to play a game. वो जो initial line tune बजती है ना, तो guess करो गाना कौन सा बजने वाला है. Which song is it? That's also very interesting. The initial music बजता है ना. And now you play word Antakshari. Even that is very interesting. Wonderful. सो म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है स्ट्रेस मतलब हल्का रखेगी, बच्चों को रिलैक्स रखेगी. सो इफ वी कैन डेवलप, वी शुड बी डेवलपिंग. कोई इफ दे आर नॉट गुड एट सिंगिंग, वी कैन ब्रिंग एन इंस्ट्रूमेंट. आई थिंक हर कोई गा सकता है. आई कांट इमेजिन एनीबडी नॉट बीइंग एबल टू सिंग. सब गा सकते हैं. यस. कट अंताक्षरी, व्हाट इज दैट? आई एम नॉट अवेयर. ओके. Okay. So this is all about musical intelligence. Now let's move on to the other intelligence. Now, what are these people good at? In maths, numbers with rhythm. Okay, yes. That's a good way of teaching. Mother Teresa, Mahatma Gandhi, Anna Hazare, Nelson Mandela. What are these great men good at? What intelligence? Okay, okay. Naturalist? Oh, social services? Yes, social worker. Mother Teresa was a social worker. But then, how was she intelligent? Intelligence कौन सी काम करती थी इसमें? Social quotient, no. Interpersonal. Political. Yes, who said interpersonal? Yes, wonderful. Yes, Sarojini Pal. Wonderful. That is the answer. Political या social worker leader. Yes, freedom fighters. Okay, wonderful. You want to say something, Sarojini? You can write it in the chat box. अभी सबको mute किया हुआ है. So we will have the question answer session in the end. Freedom fighters, yes. So yes, they intelligence जो पीछे से काम करती थी, that was interpersonal intelligence. अब interpersonal हम inter college competition की बात करते हैं, inter school competitions की बात करते हैं. So that is in regard to relating with somebody else. Kindness, yes, kindness was one trait she had. Yes, but इसमें intelligence interpersonal काम कर रही थी, right?
So this is in regard to कि आप दूसरे लोगों के साथ कैसे relate कर पाते हो, in understanding how intelligent you are in understanding other people. You are able to deal with other people very skillfully, and you can understand their emotions and feelings very easily. So your capacity to relate with somebody is very, very high. So can you think of somebody having this trait? Is it important? Interpersonal intelligence, is it important to be able to be successful in life? I think in a class of 40 children, yes, it's very important. It's very important. So जो बच्चे नहीं बोलते हैं, टीचर्स उनको डांट लगा देती हैं. Why do you want to keep quiet all the time? You have to interact ना. And even parents would tell, आप बोलते क्यों नहीं हो क्लास में जाके? घर में तो बहुत बोलते हो, क्लास में क्यों नहीं बोलते हो? So well, we have to understand that this intelligence is important, but if it is not there, how are we going to develop that? कैसे develop करेंगे अगर नहीं है? तो इनकी bonding parents के साथ और दूसरों के साथ बहुत अच्छी रहती है, लोगों के साथ भी और अपने घर में भी. They are very nicely bonded, and they form and they maintain social relationships. मतलब social बच्चे होंगे, ये जाने में interested होते हैं parties में, and they perceive and understand the feelings, thoughts, and they can motivate somebody and other people's behaviors as well. And इनको टीचिंग में हमेशा इंटरेस्ट होता है, सोशल वर्क में, काउंसलिंग में, पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ये वाले बच्चे. सो दैट्स अ नाइस थिंग. दे हेल्प पीपल इमोशनली आल्सो. यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू मिंगल विद अदर्स, बट कई बच्चे नहीं होते हैं. अगेन वो एक अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है उनकी. सो वी हैव टू एक्सेप्ट, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था, हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे इंटेलिजेंट है. वन, वी हैव टू गेट इन्वॉल्व विद आवर चिल्ड्रन. टू, और फिर एक्सेप्ट करके फिर उनको उसके हिसाब से हमें नर्चर करना है, जिस तरह से भी वो इंटेलिजेंट है. एवरीबडी इज गोइंग टू हैव 4 और 5 इंटेलिजेंसेस. उसके अमेलगम से एक कुछ ब्यूटीफुल निकल कर आता है, एक पर्सनैलिटी निकल के आती है. सो अब जो नहीं है, वी हैव रेमेडीज फॉर ऑल ऑफ देम. हमारे पास वेज एंड मीन्स है कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं वो इंटरेस्ट, क्योंकि डेफिनेटली उसका कुछ रोल तो है डेवलपमेंट में. तो सपोज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है बच्चे में, तो ये कौन से करियर्स में जा सकते हैं? Politicians, motivators, social workers, teachers, wonderful. Counselors, motivators, yes. Political, yes. Social worker, yes. You are able to relate with the pictures we showed. Social worker, yes. Or motivator. Anything to do with psychology? Psychologists, speakers, yes. Child psychology, motivational speaker, political, yes. चलो let's see. बहुत सारे careers हैं. Administrators, anthropologists, arbitrators, counselors, managers, nurse, personal director, then public relations, salesperson, school principal, sociologists, therapist, teacher, travel agents, then politicians, psychologists, and religious leaders also. So they are all good at interpersonal skills. They can understand the feelings and emotions of other people. Social worker, yes. Life coaches, teachers, yes. So there are so many careers in that regard. And suppose this intelligence is not there in our children, हमारा बच्चा नहीं है interpersonal intelligence के साथ, how can we develop this intelligence in our children? Any idea? First of all, we can take them to social gatherings. किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, इनको साथ लेकर जाए. और हमेशा जो बच्चे नहीं इसमें डेवलप्ड होते, connect with children. Yes, small TED talks, scaffolding, yes. Tell them to help each other, yes. We tell them, but they don't do it. That is the problem. Although we keep telling them, karo, but they don't do that.
So we can organize social gatherings at our place, or we can take them for service activities. You know, somebody I knew in my relations was connected with ISKCON temple. So, they have their puja at one point of time. Tell them about sharing by showing them some social services. Yes. Start going with them, doing with them. Yes. बच्चों के साथ खेलना चाहे बच्चा बनकर. Yes, that is there. Want to involve them in group activity. Yes, that is also a good idea. So in ISKCON temple, they was just supposed to write the people who were coming for that puja. Write down the name, and I think only one sentence had to be asked. So that child stood there, and over a period of time, he was very skeptical while writing the names, and then over a period of time, he got very confident. After talking to about 50, 60 people, the child got that confidence. So consciously involve such children who are timid, घबराने वाले, shy बच्चे, you can take them ऐसे सेवा में लेकर जाए, तो इन्वॉल्व हो जाएंगे. और अ स्मॉल थिंग दैट यू कैन डू इज, हम लोग जब ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो फोन आ रहा होता है और बच्चों को लेकर आ रहे हैं हम कहीं से, तो हम फोन नहीं उठाते. तो उस टाइम पे बच्चों को बोला, "आप मेरा फोन उठा के बोल दो मम्मा ड्राइव कर रही है." सो 3-4 फोन सपोज आए, तो फर्स्ट टाइम बच्चा थोड़ा डर के बात करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम तक बच्चे का वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. राइट. Talk with them as much as possible. That is very, very important. But those of them, it's very difficult sometimes. जो बच्चे shy होते हैं, वो बहुत shy होते हैं. Consciously effort करने पड़ते हैं उनको उसमें से निकालने के लिए. Right? हर intelligence का अपना role है. It is very important. And if not, I mean, we need a combination of 3-4 kinds of intelligence to, help a child be successful इन लाइफ. तो अब क्या करेंगे, उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे. वेर एवर वी नो वो उसकी वीकनेस है, वो डेवलप स्ट्रेंथ नहीं है, तो वी कैन वर्क टुवर्ड्स दैट एंड हेल्प आवर चिल्ड्रन डेवलप दैट. So now the next kind of intelligence is, so guess what these great men are good at? Swami Vivekananda, Dhirubhai Ambani, Bill Gates, Alexander the Great. What are these great people good at? Yes. लीडर्स. यस, लीडर्स पहले वाले भी थे और लीडर्स ये भी है. बट क्या डिफरेंस है? लीडरशिप क्वालिटीज है इनमें. रीच्ड फॉर इंटेलिजेंट ऑफ मनी, न्यू इनोवेशन. यस. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. वंडरफुल मधुचंदा जी. यस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. वंडरफुल. यस. Sarojini Pal also guessed that. Right. So all of these great men, they had intrapersonal intelligence. Intrapersonal intelligence, according to Howard Gardner, this is one single most intelligence which he says ये नहीं है तो existence थोड़ी सी difficult हो जाएगी हमारी. It's going to be very, very difficult. They know their strengths and what they have to do. Very rightly said. अपनी knowledge, मैं क्या हूँ, मेरी worth क्या है, मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ, this they know very beautifully. Their ability to understand awareness of themselves, their intentions, their motivations, their temperaments, desires, that is very clear. And the capacity for self-discipline, self-understanding, self-esteem, all of that, that understanding of self is very, very strong. That's on a high. See, if I ask you one thing, let me just put it in this manner. If I ask you all, so, tomorrow I'm going to conduct a dance competition. How many of you are going to come? Come on. Tell me. कितने लोग आएंगे? चैट में डालते रहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. यस. सो कोई काउंट करेगा मेरे लिए कितने लोगों ने हाँ बोला? यस. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 people said yes. 13. ठीक है. 14 15 16 14. यस. चलो, 14 लोगों ने बोला यस. राइट, हम करेंगे. अब हम लोग कितने हैं यहाँ पे? 95. आउट ऑफ 95, 14 में वेरी कॉन्फिडेंट, 16 हो गए. ठीक है.
25 बोला प्रियंका ने. ओके, 25 आउट ऑफ 94. इतने लोगों ने बोला कि यस, मैं डांस कर सकता हूँ. राइट. अब ये लोग कॉन्फिडेंट है. राइट. अब मैं क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछती हूँ. राइट. तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब कौन कौन आप लोगों में से डांस नहीं करना चाहेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट वांट टू डांस? यस. मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 25 आउट ऑफ 95 दे वांट टू डांस, इतने जवाब आने चाहिए. बट अभी कोई जवाब नहीं आ रहा. ओके, यू कैन डांस. ओके. नो. 1 2 1 2 3 4. अभी नो कहने का भी कॉन्फिडेंस नहीं है. राइट. सी, ऑटोमेटिकली आई कैन डांस. अच्छा, अभी 26 हो गए वो. तो बाकी सारों को नो बोलना है. नो बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस नहीं है. तो क्या होता है? हाँ, व्हाट डू वी डू? सो आई विल आस्क पद्मावती. पद्मावती, shall I participate? So she'll say, हाँ, I'm participating. Why don't you dance? So I'll say, अच्छा, I'll raise my hand. Okay, I'm also going to dance. And then suddenly, Neha will say, uh, how difficult the competition is going to be. I'm not participating. So then I'll say, okay, then I will also not dance. I don't even know what I'm good at. पद्मा ने बोला ज्वाइन कर लो, ठीक है. नेहा ने बोला मत करो, तो मैंने छोड़ दिया. Got it? So we don't even know what we are good at. So this is what intrapersonal intelligence is all about. I may be very good at musical intelligence. I may be very good at visual intelligence. I may be very good at interpersonal intelligence. But if I don't know, I cannot do anything about myself. Got it? See, however we frame our questions, if we don't know where we stand, if my self-esteem is not high, my understanding about myself is not high, मेरे डिसिप्लिन मुझे रहना चाहिए, मेरा टेम्परामेंट क्या है, मेरे डिजायर क्या है, मैं चाहती क्या हूँ, मेरा गोल क्या है लाइफ में, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी लाइफ में. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ इट्स काइंड. Right. This is the most important intelligence that that should be developed in children. So these children, they are aware of their range of emotions कि मेरे triggers क्या है, मैं किस बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा आ रहा है तो कंट्रोल कैसे करना चाहिए, सैड हूं तो मुझे रेगुलेट कैसे करना चाहिए, मेरा गोल क्या है, मैं कौन हूँ, व्हाट एम आई गुड एट. दे वर्क इंडिपेंडेंटली. इनको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है. दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड दे एस्टैब्लिश एंड लिव बाय एथिकल वैल्यू सिस्टम्स एंड दे स्ट्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. मतलब इनकी नीड होती है कि अपने आप की अंडरस्टैंडिंग जो है उसके लिए ये लोग वर्क करते हैं. सो धीरू भाई अंबानी की स्टोरी आप लोगों को मालूम है. ही वॉज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर. और वो कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस वाली कहानी आपको पता है. तो अगर सेल्फ रियलाइजेशन ना होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होता, सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग ना होती, डू यू थिंक ही वुड हैव रीच्ड दोस हाइट्स? और इनफैक्ट एक क्लासरूम के अंदर ये बच्चे शाय होते हैं, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते. सो आई थिंक वी विल नॉट ट्रबल आवर चिल्ड्रन. जो बच्चे शाय हैं तो बार बार उनको बोल के आप कभी भी जवाब नहीं देते हो, मुझे पता था आप कुछ बोलोगे ही नहीं, मैं जितना भी आपको बोलूंगी आप कुछ बोलोगे ही नहीं. सो वी विल नॉट ट्रबल दीज चिल्ड्रन. अंडरस्टैंडिंग के साथ हम डील करेंगे इनको. बट येस, वी विल हेल्प देम बिकम सोशल. हेल्प करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ और प्यार के साथ. जब आप डील करोगे, दे विल गेट कन्वर्टेड. डेफिनेटली the change is, they will change for the better over a period of time. It may take some time. All these activities which I shared in the last intelligence interpersonal way, it's going to help them, involve them in social get-togethers,
take them for services, and you specially organize certain things so that they get involved. They have to talk in that, conversation. They have to get in contact with people, and they start talking. You have to make them talk somehow. And whenever you want them to participate, आप group competitions में इनको participate करवाओ, not solo. Group activities में involve करो. So it's going to change them. And what all careers can these people have? ये अकेले काम करते रहेंगे, and they can do something profound also. So what all careers do you think they can go into? Entrepreneurs, yes. Role model for future generations. Yes, anybody can become a role model. Wonderful. Businessmen, yes. Business tycoons, yes. Researchers, politicians. So इस वाले politician की category में कौन से politician याद आते हैं? मनमोहन सिंह. Photographers, scientists, good businessmen, inventors, yes. Research वाले लोग, yes. Researchers, yes. I'm talking to an intelligent lot of people. So clergyman, program planner, psychology teacher, and then theologian, spiritual counselor, entrepreneur, psychiatrist, philosopher, researcher, psychologist. Yes, all these, careers. Discoverer, journalist. Yes. Spiritual teachers. Yes, wonderful. और क्या? So there are so many careers for them also. बहुत सारे careers में चुप करके काम करना required होता है. That is the need of that profession. Psychologist, why? वो ध्यान से बात नहीं सुनेंगे तो वो कैसे किसी की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे? Leaders, yes. Even astrologers, numerologists. अब तो बहुत सारे careers हैं इसके अंदर. There are so many careers which are there. Captain of ship, yes, even they can be. Leaders and more speakers, yes. Wonderful, wonderful. Now moving on, guess what these people are good at? Menka Gandhi, Bear Grylls, Edmund Hillary, Tenzing Norgay, and Sanjeev Kapoor. Yes. What are these people good at? Adventure, food lovers, adventure, nature. Wonderful. Sarojini Pal is quite intelligent. Master chef, chef hai, Hanji. Adventure, discovery. We're coming close to the point. Chef, cook, adventures, yes. Intelligence कौन सी है ये? Nature lovers, yes. Chef, animal lover, chef. Natural intelligence, nature smart, yes. Naturalist, yes, wonderful. New York Summon. Animal lover, naturalist one. Arijit Parvi, chef. Domestic and nature, naturalist, wonderful. Yes, yes, you guessed it right. So naturalist intelligence, wonderful. Naturalist intelligence, Sushmita Sharma, rightly understood. Yes. So naturalist intelligence, and now you know everything. So they are high. People with high intelligence, they are normally interested in nature. They would love staying in the parks, around the nature. They love animals. They love to relate with, all natural environments, learning about other species, and, their ability to connect with nature is very, very high. And because of that, their normal five senses, they are at a very, developed position. Their ability to smell, hear, taste, see, and touch is higher than a normal person.
Yeah, this is the last one left. Yeah. So these people you will find, at a very small stage only, very comfortably, they'll be able to handle pets, even stray dogs. So they can, touch them, relate with them, and they can play with them. And they love to be in the parks. They can identify trees. They can identify, the changes coming in the trees at different seasons. And Prakriti Prani, yes, that is there. So, nature se relate karna. Menaka Gandhi is an environmental minister of, she was an minister of environment. Yeah. And Edmund Hillary, they were mountaineers. Yeah, they dared to climb the peaks. And so they loved nature a lot. So they are interested in subjects such as botany, biology, zoology. So their taste sensors and smell sensors are very, very high. And they enjoy camping, gardening, hiking, and exploring the outside, outdoor environments. And they can recognize and can name different types of trees, flowers, and plants. So if I just ask you one small question, there must be a tree in front of your house. घर के सामने कोई पेड़ होगा, उसका नाम बताइए. नेचर के साथ कनेक्टेड रहना अच्छी बात है या नहीं, या मॉल्स में घूमना काफी होता है? लेमन ट्री, ओ ओ, मैंगो, रोज. रोज ट्री नहीं है बाबा. जैक फ्रूट, वाओ. जैक फ्रूट का ट्री घर के सामने है, वाओ. कितना रिच एनवायरनमेंट होगा. मैंगो ट्री, नीम, मैंगो, कड़ी पत्ता ट्री, वाओ. तुलसी. तुलसी इज नॉट अ ट्री, shrub. पेंडुलम, इट्स अ ट्री. ओके, वाओ. Connect with nature. Mango tree, amla, bell, guava, amla, neem. Mango tree on the left and mayflower tree on the right. Wow. Banana tree. वाओ. कहाँ रहते हो यार आप इतनी अच्छी अच्छी जगहों में? वाओ. इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं आपके घर के सामने. जैक फ्रूट, करी लीव्स, मैंगो, guava. I want to come over. I'm a naturalist, I love all these. Amla, wow. People. Shivli tree, okay. Bamboo stick tree, wow. नीम. और सबको नाम पता है. That's so nice. Anybody know सप्तपर्णी? पुत्रंजीवा. Okay. I'll come. Priyanka, I'll have to come over. Wonderful. Banyan tree. People. Coconut tree. Lychee tree. My God, lychee tree I haven't seen in my life. Wow. Banana. Moringa tree. Wow, that's so nice. Wow. You all know the names of the trees. That's so amazing. Wow. Wonderful. And anybody has seen that Sita Ashok? अभी होली आने वाली है. कौन से पेड़ के हम लोग फ्लावर्स से रंग बनाते हैं? प्रजाजता फ्लावर ट्री, वाओ. पलाश, वाओ. हाउ मेनी ऑफ यू नो पलाश ट्री? कोकोनट ट्री, अशोका, सीता अशोक, हैव यू सीन? पलाश के फ्लावर से भी मेक कलर, यस. वंडरफुल. वाओ. आई एम टॉकिंग टू नेचुरलिस्ट. बहुत सारे लोग नेचुरलिस्ट है ग्रुप में. वाओ. वंडरफुल. मेहंदी ट्री, यस. वेरी नाइस. वेरी ग्लैड टू मीट यू ऑल. तो आपके जो सेंसर्स हैं वो सारे हाई होंगे. प्राजक्ता फ्लावर, वाओ. पलाश, सीता अशोक, वाओ. पपाया, लैंड लोटस ट्री, वाओ. आई एम अमेज्ड. यू ऑल आर ऑसम. ऑल नेचुरलिस्ट एग्जिस्टिंग अवे हियर. अब करियर्स क्या क्या, किस किस ने इसको करियर की तरह यूज करा है? टेसू ट्री, मेहंदी, मलबरी, ओके. शहतूत का पेड़, वाओ. ब्रिंजल का ट्री है. ओह, आई नेवर न्यू दैट. So how many of you are into that career also, जो कि naturalist से related है? Any careers? Master chef ठीक है. Tomato tree, scientist, horticulturist, gardeners, okay. माली बोलते थे पहले gardeners को. I'm sure हम लोग माली नहीं है. Zoologist, yes. नीम, farmer, yes. फार्मिंग छोड़ छोड़ के लोग शहरों में आ रहे हैं. Botanist,
गार्डनर, मास्टर शेफ, यस, बॉटनिस्ट, और लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, वंडरफुल, brilliant farmer. You have your terrace garden. Even we have terrace gardening planners also, travelers, architects, yes, zoologists, grow more and more trees and sell fruits in the market, yes, outdoor painter, gardener, yes, outdoor planner, flower gardens, kisan, yes, wonderful, wonderful, yes. Let's see what all careers are there. इंटीरियर डिजाइनर्स, इंटीरियर्स का तो अलग हो गया, खाद बनाने वाले, कंपोस्टर्स, यस, वंडरफुल, पार्क रेंजर्स, यस, बहुत सारे करियर्स हैं, वेटरनरीज, एनिमल स्कॉलर्स, आर्कियोलॉजिस्ट, प्लांट स्कॉलर्स, शेफ्स, वेदर रिसर्चर्स, डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स, एनवायरमेंट रिसर्चर्स, एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट, कोर्टयार्ड डिजाइनर्स, इतने सारे करियर्स हैं, conservation, nature vloggers, yes, wildlife photographers, conservationists, yes, wildlife photographers, home decorators, wonderful, wonderful, you all are aware, I'm so glad to know that. Geographical, what, okay, सो वेल इतने सारे करियर्स हैं, अगर हमारा बच्चा नेचर में इंटरेस्टेड है, उसको किसी कोई डीमोटिवेट नहीं करेगा अपने बच्चों को, बिकॉज पेरेंट्स एंड टीचर्स प्ले अ वेरी बिग रोल इन फॉर्मेशन ऑफ अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी. नोबडी विल टॉक नेगेटिव. और आप ये सोचना कि शायद आपको वो करियर नहीं पता, पता नहीं है क्या बनने वाला है बड़ा होके. इकोलॉजिस्ट, यस, वंडरफुल. Ecologist, and what else I listed? Decorators, yes, wonderful. So these are the 8 kinds of intelligences that a human can possess. These are all the possibilities, and every human being is born with about 4 combination of 4 or 5 intelligences, right? हमें अब इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने अंदर और अपने बाहर कि किसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन, राइट? सो हमने ये सारी इंटेलिजेंस पढ़ी: लॉजिकल, मैथमेटिकल, वर्बल, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, विजुअल, स्पेशियल, बॉडी काइनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल एंड नेचुरलिस्ट. सो now I hope you have all got the understanding about all these intelligences. Everybody got that? Come on, everybody. Yes. Okay. अब एक छोटा सा टेस्ट लेंगे आपका. Okay. Wonderful. Are you all ready? Okay. Okay. Wonderful. So you're all teachers or parents also? All teachers in the group? Okay. Parents also can help. Yes. Teachers. Wonderful. Most of you are teachers. Yes. Parents also. Wonderful. First you are teachers and then parents also. Wonderful. Okay. So we'll move on for a small test. So like how we can learn through activities. Now I'm going to talk about this picture. What do you see in this picture? Teacher. Evaporation. Can you all see evaporation happening in this? So water droplets, they are climbing up in the sky. Heat आ रही है, formation of clouds. Yes. Rain, water cycle देख रहे हैं. Yes. Water cycle आधी पिक्चर से नहीं पता चलेगा. अब हाँ, water cycle. So if we can use tools like these, you know, कि पानी उड़ता हुआ ऊपर दिखा रहे, this is called evaporation, right? अब next page पे when we see, यहाँ पे can you see this bird wearing a muffler? रेन साइकिल, वाटर साइकिल, मफलर पहना हुआ है. अब ऊपर चली गई, वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट होकर ऊपर देखो मफलर पहना हुआ है उस बर्ड ने, तो उसको ठंड लग रही है. तो क्या डिपिक्ट हो रहा है? अब ब्रेन जो है फीलिंग्स पे काम करता है. कंडेंसेशन, यस, ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है. दिस इज योर वाटर साइकिल. फिर जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जब बहुत सारी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो रेन आती है. तो वाटर साइकिल, हाउ ब्यूटीफुली इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड. नीचे जो बर्ड है उसको गर्मी लग रही है, जब गर्मी लग रही है तो पानी इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है. इवेपोरेशन, ऊपर उसने मफलर पहना है,
उसको ठंड लग रही है बर्ड को, ऊपर कंडेंसेशन, और जब बहुत सारा पानी भर गया तो बारिश आ रही है, रेन, राइट। सो वी डिस्कस्ड अबाउट वाटर साइकिल। अब हमने कौन सी इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करा है यहाँ पर? ये सिखाने के लिए, ये पढ़ाने के लिए, व्हाट इंटेलिजेंस हैज बीन यूज्ड हियर? विजुअल, विजुअल, वंडरफुल। और काइनेस्थेटिक भी, क्योंकि फील करा ना बच्चे ने, ठंड लग रही है। द मोमेंट वी शोड दैट पिक्चर, एकदम फीलिंग आई ना, ऊपर ठंड है, नीचे गर्मी है, तो काइनेस्थेटिक भी यूज करी है। और कौन सी इंटेलिजेंस यूज करी? हम बोल भी रहे हैं, समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो लिंग्विस्टिक, नेचर, यस, नेचर की बात हो रही है, यस, लिंग्विस्टिक, नेचर, वर्बल लिंग्विस्टिक, यस, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक ऑल्सो, है ना। तीन चार मेंटल फीलिंग्स, यस, तीन चार इंटेलिजेंस को यूज करके अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वी कैन टच फोर काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस in the group, in a classroom also, right? So we can, do you think we can enter the minds of our children? अपने बच्चों के दिमाग में हमें एंट्री मिलेगी? नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, यस। सो व्हाई आर रैबिट्स इयर्स लॉन्ग? तो इसमें आंसर दिया हुआ है, अब हम पढ़ के सुनाते हैं कि छोटा सा एनिमल है, बड़े बड़े एनिमल्स उसको खा जाते हैं ना, तो हल्की सी भी आवाज आए तो ये भाग जाते हैं, इनकी सुनने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, राइट। अब हमने ये पढ़ के सुनाया, व्हाट इज दिस? ऑडिटरी, मतलब बोल के बताया हमने, और पिक्चर दिखा दी, राइट। अब पिक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम ऐसे कर रहे हैं, ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फिजिकल इंटेलिजेंस थोड़ी सी इन्वॉल्व हो रही है, काइनेस्थेटिक। तो इसमें हम ये करके दिखा रहे हैं, बोले देखो, जब हम हमें सुनना होता है किसी की बात को ध्यान से, तो हम ऐसे करते हैं ना, क्या बोला? ऑटोमेटिकली हमारा हाथ कान पे जाता है, वी आर ट्राइंग टू इलोंगेट आवर इयर्स, एंड यू नो। फिर एक और पिक्चर में आ रहा है, ये कानों को घुमा भी सकते हैं लेफ्ट एंड राइट, इस पिक्चर में दिखा रहे हैं, यस, विजुअल, लिंग्विस्टिक, ऑडिटरी, यस। और कौन सी? काइनेस्थेटिक भी तो, काइनेस्थेटिक, लिंग्विस्टिक, नेचुरलिस्ट, विजुअल, यस, यस। तो टीचर्स को तीन चार मेथोडोलॉजीज अपनी टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, देन ओनली आई थिंक you will be able to get entry in the minds of your children. Linguistic, yes, right. So something like this if it comes, तो ये जिराफ की इतने लंबे क्यों होते हैं और हमेशा जीब्रा के साथ ही क्यों रहते हैं? सो बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यस, यस। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 6 फुट लंबा होता है जिराफ, हम दिखा रहे हैं आपके जैसे 7 बच्चे हैं ना, उतना लंबा होता है, तो वो विजुअलाइज कर सकते हैं, उनके माइंड में विजुअल क्रिएट होता है, यस। और पिक्चर देख रहे हैं कि वो छोटा सा दिख रहा है, लायन इतना छोटा तो नहीं होता, वो दूर खड़ा है, राइट। और ये जिराफ्स के साथ रहते, हमेशा जीब्रास के साथ रहते हैं, क्योंकि ये देख लेते हैं दूर से आते हुए लायन को, फिर ये भागते तो साथ में जीब्रास भी भाग जाते हैं, राइट। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यस। और फिर ये बहुत तेज भाग सकते हैं, अनदर पिक्चर विल कम, ये दिखा रहे हैं, और इनका एक स्टेप 4.5 मीटर का होता है। अब 4.5 मीटर कितना बड़ा होता है? अब एक अडल्ट के 8 स्टेप्स के बराबर। तो आप चल के दिखाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप चलोगे, इतना लंबा उसका एक स्टेप होता है। सो यू आर डूइंग इट, you are doing one activity to let the child understand about a concept. So do you think it's going to be relevant? कौन सी इंटेलिजेंस यूज करी? फिजिकल इंटेलिजेंस, दैट इज काइनेस्थेटिक। व्हाट एल्स? काइनेस्थेटिक, और विजुअल तो है ही, लॉजिकल, विजुअल, यस, फिजिकल, विजुअल, लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यस। हमने फीट्स की भी बात करी और उसको इक्विवेलेंट कर दिया 7 बच्चों के बराबर, यस, और या 8 स्टेप्स के बराबर, लॉजिकल, यस। So 3-4 methodologies, 3-4 kinds of ways, have been used to explain one concept. Visual intelligence, yes. Physical also, yes. So ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा। अब ये एक एक्टिविटी है, a small activity for children. Mathematical, visual, yes. Physical, all that, yes.
A small page over here. What does it show? Alphabets लिखे भी हुए हैं और फिर B से start होने वाले words भी हैं, right? So one small activity. अब इसमें से capital B's ढूंढना जरा, कहाँ कहाँ छुपे हैं, कितने हैं? Everybody count and let me know. How many capital B's are there in this picture? Linguistic also, yes. Wonderful, Sarojini. How many capital B's are there? No, not 3. You're going to learn about the alphabet. Not 6. 4, no, wrong answer. 6, not right. Come on, everybody. 5, no. 7, no. 8, no. अब सारे बोल दोगे तो कुछ तो सही होगा. Come on, try. Capital B's देखो, ध्यान से देखो. Concentrate, everybody concentrate here. 8, no, Padmavati. Komal, no. 11, not right. 1, no. 1 से तो ज्यादा दिख रहे हैं मीना. No, 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 not right. मैं बता दूं? 10. Yes, Akash. Wonderful. 10 is the right answer. 20, मैंने कैपिटल्स पूछा है. अब स्मॉल काउंट करो. 10 is the right answer. Yes, wonderful. अब स्मॉल वाले काउंट करके बताओ. Let me see. 6, no, not right. 10, yes, that's the right answer. That is the right answer. Arpita. 8 is visible. You can move the picture here and there to see the rest of them. 10 है total इस picture के अंदर. और words बताने शुरू करो. Come on, let me see. 20 से start होने वाले कितने words हैं? नहीं, word जैसे कि blocks. और बताओ. 10 small and 10 capital. Yes. Bear. Yes. Butterfly. Banana. Yes. Bag. Boat. Bear. Bell. Beach. Bee. Yes. और book. Boat. Bag. Bench. Balloon. Balloons. Bathtub. Yes. Bird. Box. Binoculars. Bicycle. Bat. Tree. Bottle. बी से स्टार्ट होने वाला. ट्री नहीं, शिप नहीं. बोट हाउस है, शिप नहीं है. बोट हाउस है. बबल्स. बाटअप. बेयर. बीज. 120 वर्ड्स है. बूम. बेयर. ब्रूम. ब्रूम है. बटर. यस. बाइसिकल. बैग पाइपर. वंडरफुल. बाइसाइकिल. बकेट. ब्लू कलर की है. ब्यूगल. बीट. बर्ड. बेल. बनाना. 33 words are there. Blur. It's not clear. Bat. Bottle. Boat. Broom. Bees. Blue water. Yes. Ball. Block. Bright. Bicycle. Ballerina. Nobody saw that ballerina. And the girl sitting on the bed with a blanket. There's one bear wearing a bath gown. Beaver. Yes. Bubble. Bird. Bathtub. Bent. Beat. Blur. Yes. Binoculars. Buttons. बैंडेड पहना हुआ है किसी बेयर ने, चोट लगी है उसको. बैटल. बास्केटबॉल. ब्रोकली. ब्रोकली भी है. अच्छा, वेरी गुड. बेड. ब्लैंकेट. बलाड्स. यस. 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 बनाना. अबाउट 120 वर्ड्स आर देयर. जैसे कि दिस बेयर इज वेयरिंग अ ब्लू कलर्ड ड्रेस with a belt and buttons, is looking through the binoculars at the beak of the bird. And this baby bear is blowing bubbles, and the mama bear is wearing a bracelet of beads, holding a bottle, is brushing the baby bear. There's one ballerina is balancing on the blocks, and there's a broom beside that. So one bear is, filling a bucket of blue waters. This bear on the bicycle is wearing a bandage also. And the two mouse, they are playing basketball. And there are 3 kinds of balls also.
beach ball, baseball, and basketball, all starting with B. So what are we doing here? Butterfly, bullock cart. Where is the bullock cart? I'm so sorry. So what are we trying to do with this activity? So we are looking for it. We are concentrating. Yes. And vocabulary is getting built up. And we are trying to, what intelligence is being developed here? Here. Bathtub. Linguistic. Yes. Visual. Linguistic. Logical. Linguistic. Visual. Bangle. Yes. Bangle also. Bracelet. Khojna. Concentration. Yes. Khojna is concentration. Cognitive. Bracelet. Logical. विजुअल इंटेलिजेंस एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यस बट साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो रहा है यस वंडरफुल वंडरफुल फोकस यस wonderful so as teachers and parents we have to come up with beautiful techniques of teaching our children ये सारी इंटेलिजेंस को समझ के और फिर हमें इन टेक्निक्स को ऐसी चीजों को ढूंढिए अटेंशन यस एंड इंटरेक्शन ऑल्सो बहुत मजा आता है बच्चे को लग रहा है कि वो तो गेम खेल रहा है बट हम कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं प्लेफुल टेक्निक्स के साथ वी हैव इंटरेक्शन इंटरपर्सनल होगा इसमें मोस्ट वेलकम प्रियंका ओके सो वी हैव टू कम अप विद डिफरेंट वेज एंड मीन्स ऑफ टीचिंग आवर चिल्ड्रन अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग तरीके से हमें ये सब डेवलपमेंट करना है अपने बच्चों के साथ सो आई होप यू ऑल लाइक्ड इट एनी टेक अवेज अच्छा हाँ समथिंग लाइक दिस बच्चे क्यूरियस होते हैं तो ऐसी बुक्स ढूंढिए जिसके अंदर ऐसे फ्लैप्स है तो बच्चा क्यूरियस होता है उसको क्यूरियोसिटी के साथ बच्चा खोल के देखता है और इसके आगे क्या है इसके पीछे क्या है अच्छा ये पाँव है ये किसका पाँव है अरे कैमल का पाँव है और उसके साइड पे उसके फीचर्स लिखे हैं कि कैमल्स जो है दे हैव पैडेड टू टोड hooves as they walk their toes spread apart giving them extra support in sand तो ऐसे दो hooves वाले उनके पाँव होते हैं फीचर के साथ सिमिलरली ये किसका पाँव है कम ऑन टेल मी किसका पाँव है ये क्यूरियस होते हैं बच्चे तो उसके साथ हम उनको उनकी उनकी एक क्वालिटी है बच्चे क्यूरियस होते हैं उसके साथ हम उनको सिखा रहे हैं बेर ओके लेट्स सी बेर है ये तो मोल है ये जमीन के अंदर इनको टनल्स बनानी होती हैं तो इनके आगे के पांव मजबूत होते हैं पीछे के कमजोर होते हैं कैन यू सी दैट मोल सो इसमें बताया है ना मोल्स आर एक्सपर्ट डिगर्स दे टनल their way through the soil with their powerful front teeth that's how so now you can all book a session with me to understand more through CosmoFeed. ये वाला link है. I can share it in the group as well. You can note it down. You're most welcome, Nyog. You're most welcome, Inza. And yes, I also have solutions for you in regard to parenting. Parenting के regard में कोई भी problem है तो तीन कैटेगरी से आई कैन हेल्प यू वन इज बाय फॉर टॉडलर्स दैट इज प्री स्कूलर्स मिड स्कूलर्स और टीनेजर्स तीनों के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स है मेरे पास कि कैसे इनको हैंडल करना है इनकी प्रॉब्लम्स को कैसे आप वो कर सकते हो ऑल राइट एंड देन वी हैव समथिंग इन रिगार्ड्स टू concentration catalyst also this is for in regard to increasing the productivity of a child concentration की abilities अगर हमें बढ़ानी है अपने बच्चों में हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं थैंक यू न्योक थैंक यू रेखा एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड करियर ट्रायम्फ आल्सो कौन से करियर में हमारे बच्चे को जाना चाहिए तो वी हैव अ साइकोमेट्रिक टेस्ट इन प्लेस व्हिच कैन हेल्प यू यू नो डायरेक्ट देम इन द राइट काइंड ऑफ करियर किस करियर में एग्जैक्टली बच्चों को जाना चाहिए कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उनका पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं हाँ that ways. So we have three kinds of things which can be done with our children. And yes, it's going to make a lot of difference in their personality. We will share the recording as well. All right. And yes, you're most welcome, all of you, for being. And if you have any questions, you can ask me.
You're most welcome, Rani. Thank you, Priyanka. If you have any questions, you can raise your hands and ask us. Thank you, Meena. Most welcome, Sushma, Madhuchanda. Okay, we will share the recording as well. And nobody has, you want reference notes of this topic? I can do that also. And if you want, I can share one book called Well Done Parenting. If anybody is interested, you can write in the group as well. And I'll share the soft copy of that book with you all. I'll share it in the group. Don't worry. Next week, Tuesday, again, next session होगा किसी और topic पे. Most welcome. Yeah, we will conduct another session for you. Acha, Kiran, you want to ask something? Ritika, can you unmute Kiran Upadhyay? Ritika, are you there? Uh-oh. Let me just stop sharing this. Yeah. Can you Yes. unmute Kiran? Kiran ma'am, you can unmute yourself. Hello, ma'am. Hello. I'm having my preschool, and Okay. this was my first year. And what I got was all the rejected part of society. And the unique thing was they can't speak well. There was linguistic problem. A Okay. girl named Nevidi is speaking too much, but we couldn't understand her words. Okay. What she And speaks. one she's speaking Hindi perfectly. Haha. Sometimes you understand. Secondly, one Ayush boy, he is Mm-hmm. also speaking, but we couldn't understand his speech. Then Okay. again, one more girl, Tatat, she also came with a speech problem. Okay. And I was having 7 students. Out of 7, I was having 5 students with linguistic problem. Oh, Uh, I searched a lot for the what to say, a therapy sort of, but right. I couldn't do. And now I can understand part of it because I was with them for so many months. So I could Yeah. understand part of it. But how can I Okay. improve with it? Tell me कि how, what exercises or what are the remedies that I could use with it? So I need to understand what exactly, I mean, they don't speak clearly, or what exactly is the problem? I mean, they are speaking Hindi, but they're not able to speak it clearly. Where do you put it up, Kiran? Yes, it's Madhya Pradesh near Indore, Bhopal, Byaura. It is a town. Okay, you can book for a separate appointment with me, and we can sit down and talk in detail about it. Sure, Don't, ma'am. Thank one you. thing I would suggest, don't say rejected lot. Actually, it Don't was do no. that. It's पता है every जब student. ऐसे बच्चे आते हैं ना, तो हम इट्स लाइक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. हमें नहीं yes, पता कि yes. वो क्या लेकर आया है. Because they were not getting मतलब जब admission डिफिकल्टी anywhere, के no? साथ कोई भी सिचुएशन आती है ना, उसके पीछे कुछ ब्लेसिंग छुपी होती है. हमेशा लाइफ को ऐसे सही देखो. सही मैं डोंट से वैसे देखती रिजेक्टेड हूँ. लॉट. पता नहीं भगवान की बनाई हुई मैंने क्या रिजेक्ट करामात है वो. बताइए. सही बात है. पता हम उसमें बात आपके कर लिए रहे थे कितनी तो सारी मैं की लर्निंग बात छुपी हुई है. बता. आप पता नहीं क्या सीख जाओगे इस प्रोसेस के अंदर. सही राइट. सही बात है. हैव अ पॉजिटिव यस मैम. एटीट्यूड एंड ऑलवेज श्योर थैंक द मैम. लॉर्ड कि आपके पास एक चैलेंज भेजा है उससे. राइट. या ओके. श्योर श्योर. ओके मैम. विल हैव अ We'll सेपरेट discuss it मीटिंग. in detail. Don't worry. ओके मैम. Yeah. You're doing a great job. Padmavati is telling you. So I anybody have else? a question. Anybody else has a question? Any takeaways anybody would like to share? कोई solution मिला आपको इस सेशन में अपनी क्लास के लिए, बच्चों से डील करने के लिए? No solution. Inza saying no solutions. Okay. Okay. All right. So, well, if you can fill up the Google form, and if you wish to get that soft copy of that book, Well Done Parenting. That's a beautiful book, wherein वो सिखाती है कि बच्चों को कैसे
आप संभाल सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, राइट? उनको डील करने के ब्यूटीफुल तरीके वो सिखाती है वो। Fine. Ruby ma'am, you can share that with me so that I can share in the group. Sure, sure. While writing content. While writing a content, how do we put activities as per multiple intelligence? Okay. हाँ, इसके ऊपर यस मैम, अबाउट 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस काउंसलिंग में और भी इजीली बोल सकती है। ओके, सॉरी यार थोड़ा लेट ज्वाइन किया। ओके रंजन जी, कोई बात नहीं, विल बी गेटिंग दैट रिकॉर्डिंग। वेल, पहले अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि वो क्या इंटेलिजेंस आपकी जो क्लास है, कौन कौन सी इंटेलिजेंस है, उनसे रिलेट कैसे करना है, तो आई थिंक यू कैन डिवाइस योर क्लास अकॉर्डिंगली। आप अपना पूरा कंटेंट जो उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हो। You knew how to teach students with using this 8 multiple intelligence theory. That's wonderful if you are aware of. And yes, you can add on, अब थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। You want to unmute PH Padmavati? You want to unmute yourself? Yeah. Wait, ma'am, I'm Kritika? out. Yeah, just unmute her. Good evening, ma'am. Good evening, The Padmavati. session was really very interesting and knowledgeable. Basically, Ruby ma'am, I am a content writer and a developer for foundational years. Okay. Okay, and with almost 22 years of work experience in the teaching fraternity and counseling fraternity also. Wonderful. Now I have started my own freelancing, doing the content writing and development. I'll not take much time. My point here is when we are using these MIs, Right. okay, so I'm speaking about a textbook which will be given to 30 children as the same content, right? So Right. how do we put in the activities over there? So like you want to know how the curriculum can be tweaked according to the intelligence of a child. Correct. Right. Now, Exactly. suppose this concept of evaporation and condensation was there in the curriculum and this is in the syllabus, you have to teach this concept only. Now, you have to devise your ways and means. As a teacher, you are the medium between the curriculum and the child's mind. You Okay. are the mediator. Now, your job is to get into the mind of the child. Okay. So this is going to be your job to find out something which is relevant to the child. Now, like we did this small demonstration of a book. So you have to, I think the teacher should be, well versed and well equipped with materials. Probably we get that one textbook which we are supposed to follow in the classroom. We can go out and do research on that regard. That is what the work that teacher has to do. I think as a teacher, in India, we are not paid much as a teacher. But then teachers are the ones, they are actually shaping the minds of children. They are the ones, they can put the concepts in the minds of the child. And you never know which child is going to have a eureka moment. You never know where the child would go with that kind of knowledge. Maybe you can give that eureka moment to that child. You can be a medium for that. You never know what you got the child interested in or excited about. He may pursue that career later on. But then you have to equip yourself in that ways. Anything, you can devise an activity around it. I think now we are equipped with YouTube and other things. See, as a teacher, when you're standing in front of the class, you can make out whether the child is understanding or not. Even in this, in this interaction, when I'm conducting on online as well, I can understand किसको समझ में आ रहा है, कौन interested है, कौन नहीं interested. Just looking at the eyes of the children, we can make out. समझ आ जाता है ना, नहीं आ रहा समझ में. Next day, I can come up with something, कि चलो समझाना है मुझे, अब ऐसे अच्छे से कैसे समझा सकती हूँ. Wherever you find that difficulty is coming up in the class, you equip yourself. Or we can talk to each other. I think now it's a group of so many teachers. Group में डालो, I think जो ये good morning और उसके messages के अलावा, you can use this group as, interacting with all intellectual minds. मुझे ये problem आ रही है तो मैम इसका कोई solution बता दो. I think interaction इस तरह का होना चाहिए. अब यहाँ बहुत सारे teachers हैं इस group में. आप मुझसे पूछिए, टीचर से पूछिए, इस ग्रुप को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए
और हम सब मिलके इसको सॉल्व करेंगे। आई थिंक ये पैंडेमिक ने हमें सिखाया है। हम लोग कितनी जगहों पे मतलब बैठे हैं और आज हम कनेक्टेड हैं। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। Thank you, ma'am. आई थिंक वी कैन होल्ड ईच अदर्स हैंड्स एंड गेट अप, हम उठा सकते हैं एक दूसरे को एंड डू वंडरफुल जॉब्स इन आवर ओन fraternities. Sure, ma'am. Thank you so much. Thank you. Most welcome. Thank you. Wonderful knowing that you are into that research and all. I'm basically into that, ma'am. That is taking actually a lot of interest for me now. In fact, after so long years in the working line, I felt now I can create and I can even implement it in an easier way. What exactly a child wants, rather than schools have become very stereotypic now. I don't comment Yeah, on the education system, but it has become a stereotype now. yeah. Always. So And we have actually evolved out of that, I out of think. that. And our understandings have gone beyond that. Beyond that. So that's where I just want to have a breakthrough for things. So I pick up small schools and I train them and give them lot of content and how the school can be developed in a better way rather than that stereotypical one. Yeah, interactive and Like, interesting one. yes. So Wonderful. Very nice meeting up with you. And thank you. looking forward for your inputs as well. I hope this session made some Your sense. session was really great, ma'am. Actually, it is Thank you so simple. much. It's great. So when you're sharing with somebody, it is very easy to tell them this is what we are looking for in the classroom. So Yes, teachers, please gear up. Don't be a typical teacher. See that yes, you can give them something. Now, when I met Kiran ma'am, that's what I'm saying. She's doing yeah. an amazing job Okay, for the wonderful. kids. Yeah, Oh, very rarely you find teachers who are doing those kinds of jobs. In fact, okay. I understand that. I mean, there are a lot of troubles and problems coming correct in between, problems. but then they are all blessings in disguise. Blessings. That's how we That's should be taking it up. And true. I think now we can hold each other's hands and take it Very forward. true. Very true. Thank you, We ma'am. can all help each other. Most Thank you. welcome. And Manish ji is asking, ma'am, for making a great leader, what is the most important uh, to set a mindset for early age education? Well, as I should be asking the same from you as well. One is the job skills that is required. जिस भी जॉब में हम प्लान कर रहे हैं जाने का, जॉब स्किल्स रिक्वायर्ड है. एनालिटिकल स्किल्स मतलब उसकी नॉलेज, उस काम की नॉलेज और उसके स्किल्स होने, राइट? देन एनालिटिकल स्किल्स की हम डिसीजन ले सके, एनालाइज कर सके, हम लोग एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे. सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है, वैल्यूज और स्किल्स दोनों रिक्वायर्ड है, नॉलेज भी रिक्वायर्ड है. उसके साथ साथ अगर हम उसको लेके कैसे चलेंगे उस बच्चे को, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स का हमने लास्ट टाइम किया था, उसके हिसाब से उसको हैंडल करके, उसकी स्ट्रेंथ्स के थ्रू उसकी वीकनेस को ओवरकम करके, आई थिंक वी कैन ब्रिंग आउट अ ग्रेट लीडर इन एवरीबडी. एवरीबडी इज बोर्न विद सम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो हर वीकनेस को ओवरकम करने का रास्ता स्ट्रेंथ्स में से निकलता है. तो स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कीजिए, उन स्ट्रेंथ्स के थ्रू वीकनेसेस को ओवरकम कीजिए, उस बच्चे में से कुछ ब्यूटीफुल निकालिए. आई थिंक एवरीबॉडी हैज अ कैपेसिटी टू बिकम अ ग्रेट लीडर. लीडर मतलब जो मोटिवेट कर सके, सामने वाले को राह दिखा सके. जरूरी नहीं कि मैं आगे कोई पॉलिटिशियन सर बन के ओपनिंग का लीडर. टाइमिंग क्या रखा है? किसका? आई थिंक somebody said. सर So ओपनिंग का basically, टाइमिंग क्या रखा है? Ritika, just mute yourself. Oh, I'm so sorry. Okay. Analytical skills, personal attributes, and social skills, values, all that is required to become a good leader. If UKG boy student expert in cheating exam, then what is his personality type? Please reply. If UKG child is expert in cheating exam, then that's lack of values. बैठ के कहानी सुनानी पड़ेगी, राइट? वैल्यूज को टच करना पड़ेगा. किससे ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे बेटा. ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है. ये जल्दी छूट जाएगा. कहानी बना के सुनाएंगे उसको. That's very interesting, Manish ji. You ask very interesting questions. यूकेजी के बच्चा, आई एम सो अमेज्ड यार. बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं बच्चे. Okay, any more questions?
Cheating is part of leadership quality, is it right? Oh, they are not good leaders. I will not respect that person. No, it's not a part of a good leadership quality. No, I don't agree. What do you all say? Is it a good leadership quality? Although leaders do that, but it's not a good quality. As a teacher or as a educator, I will never teach something like this. मैं तो नहीं सिखाऊंगी ये. ना मैं करने दूंगी अपने सामने. Yes. Yes, even I will not let them do. So any more questions? I think he will be great in business mind. Whatever he becomes. But cheating मैं नहीं सिखाऊंगी. जो मर्जी करे कोई अपनी लाइफ में. Yes, teach him basic ethics. See, kahaniyan, they have good metaphors. Stories have a very powerful impact on somebody's minds. आप किसी का पूरा कैरेक्टर चेंज कर सकते हो कहानी सुना के. अच्छी कहानी इसके ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर ढूंढ के आप सिखा सकते हो, सुना सकते हो. उसका इम्पैक्ट, क्योंकि अभी यूकेजी में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होने वाला है. 0 to 4 के अंदर है अभी. 50% डेवलप हो रहा है और मोल्डेबल एज में है बच्चा. उसको मोल्ड कर सकते हैं हम जैसे हम चाहे. Yes, probably he's doing it for fun. So any more questions anybody has? All right. So let's meet up next Tuesday with a different topic now, and stay connected. You can all pour your questions. I love to answer all those questions. We can ask each other also, and let's stay connected during the week till Tuesday. Thank you so much, Padmavati. Thank you, New York, Saman. Sure. So let's gear up for next Tuesday. We'll meet up next Tuesday with a new topic now. Goodbye. Thank you. Thank you, everyone. Fine. Thank you so much, Ruby ma'am. Thank you so much for joining with us. Thank you everyone for joining Most welcome. You're all most Bye welcome. bye. Have a Thank you nice so much. day.